करने के लिए बोला था। आई होप सभी लोगों ने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो उसका पहले डिस्कशन करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो ये शीट सॉल्व किया है ना सभी लोगों ने? एक्सपोनेंट शीट कंप्लीटेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, वी आर डिस्कसिंग द शीट इंडाइसेस। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था, थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो गया, इसका लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हो गए। नाउ वी हैव टू डू द डिस्कशन ऑफ दिस शीट। सो क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? अनुष्का, शीट कंप्लीट हो गया क्या? चलो ओके, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज this is in numerator and this is in denominator is equal to x and we have to determine the value of x. Okay, so this is 1 upon 216 to the power minus 2 upon 3 divided by 1 upon 27 to the power minus 4 upon 3. This expression equals to x and we have to determine this variable. तो बेसिकली आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। So 1 upon 216 to the power minus 2 upon 3 can be written as 216 to the power 2 upon 3, and this is 1 upon 27 to the power a negative number, so this can be written as 27 to the power 4 upon 3. ठीक है, like 1 upon 8 to the power minus m can be written as a to the power m. इंडेक्स है नेगेटिव, सिंपली मींस नंबर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 upon a will be a and if a is there then it will be 1 upon a. Okay, so now it is 216. Clearly 216 is cube of 6. हाँ, into 2 by 3 upon 27, clearly cube of 3 into 4 upon 3. 3 cancel, this 3 is also cancelled. 6 square 36. ठीक है, and 3 to the power 4 is 81. Now we can cancel numerator and denominator with the help of 9. 9 4 is 36 and 9 9 is 81. So final answer is 4 upon 9. अच्छा, नेक्स्ट संडे 30th को आप लोग का क्यूमुलेटिव टेस्ट है। टाइमिंग विल बी 3 hours, टोटल 80 क्वेश्चंस। आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, आई थिंक देखा है आप लोगों ने? Yes. हाँ, PCMB. Okay, so PCMB 20 questions from each subject, and mathematics का जो portion है that is indices, completing squares and क्या? Factorization. हाँ, factorization. 10 questions will be from indices, 5 questions completing squares. Sorry, completing squares में 5 questions काफी ज्यादा एक्चुअल में। 4 questions completing squares, 6 questions factorizations, and 10 questions will be from Indices. शीट का रोल रहेगा यार, है ना? तो प्लीज मेरे को नहीं बोलना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी आप लोग को शीट सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियरली आंसर इज 4 upon 9। ठीक है, अच्छा, आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता था कि इफ द फाइनल आंसर is in the form of this, then find out the value of y. So y will be 2. Okay, now question number 2. Question number 2 is 3 to the power n square root is equal to 81. Then we have to determine the value of n. अच्छा, ये सब नोट नहीं करना आपको, क्लास के बाद में शेयर करता हूँ PDF. So second question. For the first question, can we write the divisible answer, like the least answer also? But this answer, हाँ, 4 upon 9 correct answer है ना? And again, then 2 by 3, then again. नहीं यार, 4 upon 9 2 upon 3 थोड़ी होता है क्या? नहीं, sorry. हाँ, 4 upon 9 ऑलरेडी ये
सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसके फर्दर हाँ, आप हाँ। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते Yes. because 4 and 9 are co-prime numbers. What are co-prime numbers? Numbers जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है अदर देन 1. ऑब्वियस ही बात है यार, है ना, देखो 1 तो सब में कॉमन होता है, ठीक है. So second question is this: 3 to the power n square root is equal to 81. We have to determine the value of n. Okay. So this is 3 to the power n, and what is the meaning of square root? Power. 1/2. Okay, and on the right side this is 81. 81 is 3 to the power 4. 4. A to the power m bracket n. This expression will be a to the power. Mn. So this is 3 to the power n upon 2 is equal to 3 to the power 4. Base same, index should also be Same. huh. So n upon 2 is equal to 4. Using cross multiplication, n is clearly option B. 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 Sir, you did on, yeah, that step. What did you do? In which step? This step where your cursor is there. Yes, that one. Like this is na, a to the power m is equal to a to the power n. Base are same, index should also be Same. same. Okay. Like 3 square is equal to 3 to the power x. What will be the value of x? 2. 2. हाँ, x can be 3 क्या? No. Possible ही नहीं है, possible Then ही they नहीं है. won't be equal. 100% won't be equal. Okay. So if bases are same, then index must be same. Now question number 3, ये try करो एक बार आप. Question number 3 try करो. Let's see who will get the answer at first. Question number 3 is 64 to the power minus 2 upon 3 multiply with 1 upon 4 to the power minus 3. This is the question. अच्छा, वैसे ऑनेस्टली बताओ, is there any student who have completed this sheet up to question number 35, all questions? Sir, answer will be 4. ठीक है. Now my question is कि कोई स्टूडेंट है जिसने ये शीट कंप्लीट किया था? अच्छा, क्वेश्चन 20 तक किसी ने ट्राई किया था? क्वेश्चन 20 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम पे आपको बोला था शीट कंप्लीट करने को? ठीक है, तो करके आना चाहिए आप लोगों को, है ना. नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना, जो भी होमवर्क देते हैं वो कंप्लीट करना है. नो एक्सक्यूजेस इन दैट. Okay, so now question number 3, 64 to the power minus 2 upon 3 multiply with 1 upon 4 to the power minus 3. This will be 4 to the power 3. and this will be 1 upon 64 to the power. 64 to the power 2 2 by upon 3. 3. ठीक है. 64 is cube of 4. 4. 4. 4 cube and 2 upon 3. 3 cancel. अच्छा ये 1 है यहाँ पे, ठीक है. Okay, so 1 upon 4 bracket square यानी 1 upon 16. हाँ, and 4 cube is 64. Final answer is 4, option C. 3. C. Now try question number 4. This question: 1 upon 216 power minus 2 upon 3 plus 1 upon 256 power minus 3 by 4 plus 1 upon 243 to the power minus 1 upon 5. This is the question.
Tanuj, can you explain this question? Sir, can you show the options? Okay. So options are these. Sir, answer is 103. Option A. Yes, sir, 103. Okay, can you explain? Yes, Sir, sir. हाँ बोलो. Anyone who can explain this question? sir, can I? हाँ बेटे तुम बोलो. Sir, first 1 upon 216 power minus 2 upon 3 will become 216 power 2 upon 3 Then plus of 256 power 3 upon 4 and 10. 243 power 1 upon 5. Okay. Then 216 is 216 is cube of 6, so it correct. will become 6 square, 36. Okay. Then 256 is 4 power 4, so it will become 4 Equal. cube. And Then 243 is 3 power 5, so it will become 3 power 1. correct. Cancel. This is also cancel. This is also cancel. 3 to the power 1 is 3 and 4 4 cube. cube is 64 and 6 square 36. So final answer is option A. Correct answer. Very good. Next question, question number 5. Question number 5 is 4 to the power 0.5 multiply with 0.5 to the power 4 equals to. ये calculate करो. Options present है यहाँ पे ABCD again. So this value we have to calculate. Zero 0.5 is 1 upon 1 upon 2. हाँ, and what is 0.25? 1 upon 4. okay. So 0.5 is 1 upon 2. ठीक है. So this is 4 to the power 1 upon 2 and this is 1 upon 2 to the power 4. काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. जल्दी से आंसर बताओ. Sir, I think the Sir, 1 answer will upon be 8. 4. 1 upon 8. 4 is square root is 2. 1 upon 2 to the power 4 is 1 upon 16. So clearly final answer is 1 upon 8. Next question number 6. थोड़ा फास्ट करते हैं ना, फास्ट करते हैं थोड़ा. Next question number 6. 1 upon 64 to the power 0. 64 to the power minus 1 upon 2 plus 32 to the power 4 upon 5 minus 32 to the power minus 4 upon 5. Okay. This is the question. If any student having any doubt, he or she can ask. Okay, so 1 upon 64 to the power 0 is 1. 1. clearly any number to the power 0 is 1. This statement is true or false? True. यार इसका मतलब आप नोट्स रीड नहीं करते हो बेटा, ये गलत बात है ना. Sir, no, 0 power 0 is not defined. This is false Yes. statement. Yes. 0 to the power 0 is not defined. ये लास्ट टाइम पे बताया था आपको है ना. तो clearly this is obviously 1 upon 64 is not 0. So this is non-zero to the power 0. This is 100% 1. Now this 64 to the power minus 1 upon 2 यानी कि 1 upon 64 to the power 1 upon 2. And what is 64 square root? 8. The power 4 upon 5. 32 is 2 to the power
2 to the power 5. 5. 5 cancel. 2 to the power 4 is 16. 16. and this will be 1 upon 16 because same expression है यहाँ पे index negative का meaning होता है number will get reciprocal. Okay, so finally this expression we have to solve. 16 plus 1 17, 1 upon 8 minus 1 upon 16. ये solve करो और check करते हैं what will be the final option. Sir, option C. Option C, okay. ठीक है, so काफी simple. 16 LCM, this will be 2 minus 1 यानी कि 1. So this is 17 plus 1 upon 16 can be written as 17 and यहाँ पे 1 upon 16. Correct है. अनुष्का आपने बताया क्या? Yes, sir. हाँ अनुष्का correct answer है. Final answer is option C. So answer will be this only 17 and 1 upon 3. आपको इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना आता होगा आई थिंक है ना, like 2 and 3 upon 4 Yes. will be 4 into 2 8 plus 3. 11 upon 4. हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर इसको प्लस. Sir, so as per the options, you have to write answers. हाँ डेफिनेटली यार, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको फाइनल आंसर लिखो, वो कंफर्म है. सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन मेनी फॉर्म्स. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन व्हाट वी हैव टू राइट या व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट फाइनली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो. 2 and 10 upon 27. So 2 and 10 upon 27 will be actually denominator is 64 upon 27. 27. 64 upon 27. And what is 11 and 1 upon 9? 100 upon 9. 100 upon 9. ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पे. And what is 6.25? 625 upon 10. 100. 100. 4 जा 100, 25 25 यानी कि 625. So this is 25 upon 4. Okay. तो इसको सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर है. Sir, in first one, the power is negative or positive? This is negative actually. This is minus 2 upon 3. This is minus 2 upon 3. This is the question. (64 upon 27 to the power negative 2 upon 3). Okay. Index negative number will get reciprocal. Okay, now Arnish, you tell. Arnish, 27 upon 64 to the power 2 upon 3. So 27 is cube of 3. and 64 is cube of 4. okay.
3 and 3 cancel. Now Cancel. 3 square 9. and 4 square 16. divided by 9 upon 100. इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बोलो? 3 upon. 10. So finally this will be actually multiply with. 10 by 3. Yes. Okay, plus what is the square root of 25 upon 4? 5 by 2. Divided by, यानी कि will multiply with Yes. minus 4. 4. Okay, ठीक है. So now this is cancelled 3 times. 2, 8, 2, 5. This is 15 upon. 15 upon 8. And this is minus. 10. LCM is 8. and this is 15 minus 80. 80. 80 and this is minus 65 upon 8. so final answer is minus 65 upon 8. Again we have to check the options. According to minus 65 upon 8, what will be the final option? Sir, minus 8, 1 upon 8. Correct. Sir, Option A. correct. Any doubt? No. No, sir. So just show the calculation once again. Solution once again. Just a minute. इंडाइसेस टफ नहीं होता और काफी ज्यादा यूजफुल होता है इंडाइसेस. अगेन क्यूमुलेटिव एग्जाम में 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंडाइसेस. आपके पास पूरा एक वीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, नोट्स रीड करो, ये शीट सॉल्व करो. ये शीट कंप्लीट होता है उसके बाद मैं एक शीट और सेंड करता हूँ, वो सॉल्व करो. और कोई भी डाउट है बिफोर एग्जाम उसको डिस्कस करते हैं. क्लियर? Yes. Okay, so next question. Next question is question number 8. ये ट्राई करो. थोड़ा फास्ट करते हैं, इसमें ना 35 क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करने हैं हम लोग, तो थोड़ा फास्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 6.25 स्क्वायर रूट. व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 6.25? 2.5. हाँ, and what is the square root of 0.0144? 144 का स्क्वायर रूट 0.012. नहीं बेटे 0.12. Yes, 0. हाँ, ये कंसेप्ट आपको पता है ना, लाइक जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आएगा 12 स्क्वायर इज 144. बट अभी यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स है बोलो? 2. 2. तो इन स्क्वायर डेसिमल के राइट साइड में नंबर्स होने चाहिए इसके डबल, यानी कि 4. नाउ 1 2 3, वन मोर जीरो वी हैव टू अप्लाई एंड यहाँ पे पॉइंट. अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. लाइक क्वेश्चन होता दिस 0.2 होल क्यूब. सो व्हाट इज 2 क्यूब? 8. अभी क्यूब है, यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स है बोलो? 1. 1. क्यूब में 1 का ट्रिपल यानी कि 3. सो दिस इज 8. वी हैव टू अप्लाई 0 एंड अगेन 1 मोर 0. फिर यहाँ पे Yes. ओके. सो दिस इज 0.12. ठीक है. इन द डिनोमिनेटर इज दिस इज 0.027 क्यूब रूट. दिस विल बी 0.3. and this is 81 to the power 1 upon 4. 81 to the power 1 upon 4 is 3 power 4. 4 And 4 that is cancel यानी कि 3. 3. एंड यहाँ पे है +1. ओके. अभी ये मल्टीप्लिकेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो ना मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन +1 upon this. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ये ट्राई करो. 4 to the power. Sir, can you explain me that the 0.0144 0 point. in the 8th question Okay. that 0.0144 how we removed its square root, like देखो सुनो, सपोज करो क्वेश्चन है 0.16.
square. So what is 16 square? 256. 256, yes. हाँ, यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं? 1. I टू mean, टू 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 decimal. Okay, 2. डेसिमल के राइट साइड में 2 नंबर्स. तो इन स्क्वायर देयर विल बी 4 नंबर्स ऑन द हाँ. राइट साइड ऑफ डेसिमल. अभी कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? There are 3. तो वी हैव टू अप्लाई अ 0 एंड यहाँ पे पॉइंट. अंडरस्टूड? Okay. लाइक Means क्वेश्चन for होगा. making it in decimal. हाँ, डेसिमल भी आंसर आएगा. हाँ. लाइक क्वेश्चन है 1.6 स्क्वायर. सो अगेन व्हाट इज 16 स्क्वायर? 256. अब भी डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स है बोलो? 1. सो इन स्क्वायर देयर विल बी 2 नंबर्स. तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल. Okay. लाइक क्वेश्चन इज दिस. तो इसमें तो डेसिमल है ही नहीं है ना. हाँ. अच्छा, और भी लिख सकते हैं. लेट्स से ये हो गया क्वेश्चन. सो व्हाट इज 8 स्क्वायर? 64. डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स है बोलो? There are 2. इन स्क्वायर देयर विल बी 4 नंबर्स. 1 2. अगेन वी हैव टू अप्लाई 2 zeros और फिर यहाँ पे पॉइंट. Then decimal. Okay. Understood, sir. हाँ, तो स्क्वायर में डबल आता है, स्क्वायर रूट में हाफ हो जाता है. Okay. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, क्यूब में ट्रिपल होता है. एक सेकेंड. सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस. 0.8 होल क्यूब. व्हाट इज 8 क्यूब? 500 एंड 512. अभी डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं? 1. स्क्वायर में 2 नंबर्स एंड क्यूब में 3 नंबर्स. सो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट. क्लियर? Yes. सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस. 3 क्यूब कितना होता है बोलो? 27. 27. अभी डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं? 2. 2. हाँ, स्क्वायर होता तो डेसिमल के राइट साइड में शुड बी 4 नंबर्स. लेकिन क्यूब है तो अभी डेसिमल के राइट साइड में 2 Six into 3 numbers. 6 नंबर्स. ये कितने डिजिट्स है बोलो? 2. Just 2. So we have to apply how many zeros? 4 more zeros. हाँ, यहाँ पे ऐसे. क्लियर? So sir, हमारे डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने डिजिट्स है उसको पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर उतने छोड़ने पड़ते हैं. हाँ, ऐसा बोल सकते हो. बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि 3 का मतलब ट्रिपल होता है, 4 का हाँ. मतलब 4 टाइम्स होता है. ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. Yes sir. हाँ. सो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 to the power 3.5 रेशियो. रेशियो का मतलब होता है डिवीजन दिस. ये बताओ. So 4:1. ऑप्शन ए. Yes. चेक करते हैं. 3.5 is 7 upon 2. 2 and 4 is 2 square. 2 2 cancel. This is 2 to the power 7 upon 2 to the power 5. Again a to the power m upon a to the power n. a to the power Power 2. m minus n. यानी कि 2 to the power 2. Clearly answer is 4 upon कुछ भी नहीं. तो कुछ भी नहीं का मतलब 0 तो होगा नहीं है, 1. यानी कि 4:1. Now question number 10. Answer of 10 will be 5 power 4, right? 5 to the power 4. Okay, check करते हैं. This is 5 to the power 9. This is not a square root because 6 is present here. This is basically 6th root. And again, cube root and this to the power 4. 4. Anushka, can you explain this question? Yes, sir. Okay. Sir, I directly simplified all the values by doing 5 power 9 multiplied with 4 Okay. Okay, then. multiplied by 1 upon 3 Okay, then. multiplied with 1 upon 6. हाँ, correct है. This is 5 to the power 9. 6th root मतलब होता है 1 upon 6. And then cube root, इसका मीनिंग होता है 1 upon 3 and then power 4. यानी कि this. Okay, so this is 3 times cancel, 2 times cancel, 2 times cancel. यानी 5 square. Now right side. 5 to the power 9 cube root
then sixth root, and then power 1 upon 4. Ojas, can you explain this expression? Ojas, can you explain? Sir, can I explain? Okay, तुम explain करो, start. Yes. So, sir, we have to write 5 to the power 9. Okay, then multiply with, Then we have to multiply with 1 upon 3 into 1 upon 6 and And then then- into 4. okay, And then Next. 3 and 9 we can cancel. 3 times. Yes. Then And again, Then 3 and 6 we can cancel. 2 times. Yes. And Then 4 2 and times 2 we 4. can cancel 2 2 times. times. So this is 5 square into 5 square e to the power m into e to the power n e to the power m plus n. 2 plus 2 is not clearly 6. This is 4. So final answer is 5 to the power. 4. 4 B. Correct. That अच्छा, means we have to take the roots one by one to the front side by making it in the fraction form. हाँ यार ऐसे ही होता है ना, ये तो बताया था आप लोग. Like suppose करो simple this expression है, this is clearly square root यानी power 1 upon 2. If this is written, then this is 1 upon. So, sir, any number in the root side, we have to take 1 upon that number. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो first page पे ही बताया था. Yes. Okay. On the very first page. कहाँ पे है, ये रहा. Yes. Clear? Yes. ठीक है. अच्छा ये बताओ एक, like e to the power m into e to the power m into e to the power m up to n times. This is first question. Then e to the power m bracket m bracket m bracket m n times. Third question. e to the power p, यहाँ पे m, फिर m, फिर m, ये n times. Sir, can I say first question answer? हाँ कितना है बोलो, e to the power A to the power m into n. m plus m plus m plus m up to n times, like apple apple Yes, apple yes. apple apple 10 times 10 apples, 100 times 100 apples. अभी m plus m plus m plus m n times यानी कि m into n. Yes. Okay. And Second sir, question. second also I can say it will be m to the power n. m to the power N. Sir, it will be same. नहीं बेटे सेम थोड़ी आएगा. m into m is not 2m. m into m is M square. M square. M into square. m M cube. M cube. into m Power to the n power will be. 4. हाँ. Yes. म्हणजे So So this is a a to the raised power. to m n raised times. to power n. और ये आपको बताया था e to the power m to the power n will not be equal to e to the power. M M n. into n. नहीं M होगा. into n. We have to first solve m the power and then we have to and solve. then we have हाँ. like this question 3 to the power 2 to the power 3 and 3 to the power 2 bracket 3. This is 3 to the power Not same. That is 6. and this is and 3 that- to the power. 3 to the power 8. 8. Okay. Then third question. ये बताओ. 1 upon m to the power n. नहीं ठीक से बताओ. This is a to the power p. चलो p रहने देते हैं. इतना बताओ जस्ट. A to the power 1 upon mn. e to the power 1 upon m m. n or m to the power n. M. Sir, can you put numbers? It is getting confusing. You have to answer in form of m and n. Okay. हाँ. Option A or option Sir, B? m power M n. power n. हाँ, option B. B will be the final answer actually.
This is a to the power 1 upon m, again multiply with 1 upon m, again multiply with 1 upon n, again multiply with 1 upon m, ऐसा n times. तो ये एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन, बस यहाँ पे न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर. So m into m is not 2m, m into m is m square. Finally m n times, लेकिन वो multiply है तो m to the power n. Clear? Yes. Okay. Now question number 11. Sir, answer is 9. Yes, sir. Answer is 9. Question number 11. So you can explain this question 11. Yes, sir. Sir, can I? ये किसने बोला था अभी? श्रावणी या अनुष्का? अनुष्का. चलो अनुष्का तुम एक्सप्लेन करो अभी क्वेश्चन नंबर 11. Sir, 243 can be written as 3 power 5 Okay, bracket n power 5 n upon into 5 3 to the power 2n plus 1. upon 9 can be written as 3 power 2, so 3 power 2n into And this 3 is- power n minus 1 5 will get cancelled. Okay, next So, step. so 3 power n plus 2n plus 1 Very good. Upon and 2n minus n plus minus 1 means n minus 1. नहीं बेटे पहले डिनोमिनेटर है ना, तो यहाँ पे तो ऐड करो इनको पहले. So 2n plus n 3n minus 1. minus 1. हाँ, now we will apply a to the power n minus n n. So now it is 3 to the power 3n plus 1 minus 3n. minus 3 power n minus 1 This is 3n plus 1 minus. minus 3n plus 1 हाँ, 3n cancel. 3 to the power 2 is 9 option can be. B. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ये सॉल्व करो. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. Sir, in that question, it is x power x root x, right? हाँ, definitely. This is x to the power x root x. And on the right side, x root x power x. Sir, is it 3 upon 2? 3 upon 2 option A. Okay, we'll check it. Acha, tell me what is a root a? A to the power 3 upon 2. 3 upon 2. ये बताया था आपको. It is a to the power 1 and this is a to the power 1 upon 2, a to the power n plus n, 1 plus 1 upon 2 यानी 3 by 2. ठीक है. Rajda, can you explain? Sir, can I explain this? Viraj, Yes, sir. हाँ बताओ. X to the power X to the power x and that to the power 1 upon x. नहीं यार, नहीं? ठीक से बताओ. This to the power 3 by 2 ना. यार आप लोग नोट्स ही रीडिंग करते हो, ये तो बहुत गलत बात है. ऐसे नहीं होता है बेटे मैथ्स में, ऐसे थोड़ी होता है. क्या बिना रिवाइज किए आते हो क्लास में? ऐसे नहीं होता. देखो ये बताया था स्टार्टिंग में, लाइक a root a is equal to a to the power x. This is a to the power 1, a to the power 1 upon 2, a to the power m into a to the power n. This is a to the power m plus n. यानी कि 1 plus 1 upon 2 and 1 plus 1 upon 2 is 3 by 2. 3 by 2.
हाँ. Okay, so this is clearly x root x similar to a root a. So this is x to the power 3 by 2. And on the right side, this is x to the power 3 by 2 to the bracket. power x. हाँ, तो ये है x to the power 3x by 2 and on the left side x to the power 3 3 by by 2. 2. Base same, index also. Should be same. हाँ, so this is x to the power 3 by 2 2 by is equal to 3x to the power 2. अरे नहीं यार 3 to क्या बोल रहे हो 3 3x by 2. हाँ 3x by 2. ठीक है. अभी बताओ नेक्स्ट स्टेप बोलो. This x we can divide here, yes or no? Yes. So this is x to the power 3 by 2 upon x to the power 1, a to the power m upon a to the power n, a to the power M minus n. 3 by 2 minus 1 is 1 upon 2. equal to 3 upon 2. 1 upon 2 is like square root, yes or no? Yes. Yes. So root x is equal to 3 by 2, x is equal to 3 by 2 whole square. हाँ, तो वो कितना होता है? 9 upon 4. So final answer is option C. C. अभी तक ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ठीक लगा 1 to 12 में. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, एक बार कुछ सॉल्यूशन रीड करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. This is x to the power x root x and on the right side x root x power x. Who can explain this solution? Viraj, can you explain? This one. Yes, this one. This solution you have to explain. Okay, so from starting. From start. Okay. So first we took on the right side, we took x to the power 3 by 2 to the power x because x to the power root x is equal to this to the power x. And on the left side, we took x to the power x to the power 3 by 2 because अरे यार, हाँ, because this is This x to the is- power 3 by 2. 3 by 2. ठीक है, next बोलो. So then, because there was a equal to sign and bases were same, then the power should be same. Okay. So then we were equalizing the powers. In that, we took the x from the right hand side and made it the denominator on left hand side. First we will be say, Ah, first powers are same. X to the Yes. power 3 by 2 is equal to 3x by 2. 3x by 2. Now next step. So then we took that x That on x, the okay. right hand side On the and left we hand put side, it denominator. on denominator. So Okay. that will be x raised to 1, x to the power 1. हाँ, मतलब that will be नहीं है, वो actually x to the power 1 ही है. Huh. Okay. Okay. Then we wrote that. Then after that after division we got x to the power 1 upon 2. How? Sir, because we divided, then that is equal to root x. Because it is a to the power m upon a to the power n form, and And this is a to yes, the power. and that is a to the power m minus n. हाँ, तो 3 by 2 यानी कि 1.5 minus 1 यानी कि 1. So 1.5 kg में से 1 kg रिमूव करोगे तो कितना आता है? 0.5 kg आता है. 0.5 kg is remaining. So that is Root x root x, and then is equal root to 3 x by 2. is equal to is equal to 3 by 2. And the And final so- answer is
Final answer is 9/4. X is equal to 9/4. Suppose question is this: x to the power 1 upon 3 is equal to 3/2. Then x will be Uh, huh, 27 upon upon 8. 27 correct. upon 8. Next question is question number 13. ये try करो. Okay, so this is 1 minus, चलो ये मैं explain करता हूँ ना, 1 minus 1 minus 1 minus a to the power 4, यहाँ पे है -1, then this is curly bracket, again -1, then this is square bracket, and यहाँ पे है -1 upon 4. 4. Okay, so starting with this expression, this to the power -1, यानी 1 upon 1 minus a power 4. 1 minus a to the power 4, and this is 1 minus. Okay, LCM is 1 minus a to the power 4, this cross multiply, then -1. So this is 1 minus a to the power 4 minus 1. 1. 1 and 1 cancel. ठीक है, तो ये अभी कर्ली ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन आ गया ना यहाँ पे, एंड दिस टू द पावर -1, सो रेसिप्रोकल, यानी कि 1 minus a to the power 4 upon minus a power 4. ठीक है, एंड देन यहाँ पे दिस इज 1 Yes. minus, so this minus and this minus will become, so this is 1 plus 1 minus a to the power 4 upon a to the power 4. LCM is a to the power 4. Now cross multiplication, a to the power 4 plus 1 minus a to the power 4, this portion. Sir, how it came 1 minus a raised to 4 minus 1? This, No, sir, upwards. यहाँ पे ये क्या? Yes, sir. अच्छा ये बताओ 1 minus 2 upon 3 कितना होता है? LCM is 1 upon 3. हाँ, so LCM is 3. 3 into 1 is 3 minus 2, यानी कि 1 upon 3. Same step यहाँ पे. LCM 1 minus a to the power 4. Now this into this, 1 minus a to the power 4 and minus 1. 1 and 1 Cancel. Cancel. understood? Yes, sir. Okay. So this is minus a to the power 4 upon 1 minus a to the power 4 whole power minus 1. Minus 1 कहाँ से आया? क्वेश्चन में है ये. So reciprocal ये हो गया अभी 1 minus a to the power 4 upon this minus a to the power 4. Now this step, this is 1 minus. So clearly minus minus is plus, denominator this, again same step, 8 to the power 4 into this. So 8 to the power 4 plus 1 minus a to the power 4 cancel, and this whole power minus 1 Minus upon 1 4. upon 4. हाँ, okay. ठीक है, so index negative reciprocal यानी e to the power 4 into 1 upon 4. 4 cancel. Final answer is, A. this is the final answer. Option एक बार रुको देखते हैं. So final answer is option C. C. लेक्चर के बाद में ये पूरा वीडियोस गो थ्रू करना, एक बार आपने यहाँ पे सॉल्व करना. ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन, इवन सारे क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 14 काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज 64 टू द पावर a इज इक्वल टू 1 upon 256 पावर B. हाँ, Sir, answer will be 0. करेक्ट आंसर है. 64 is 4 cube यानी 4 to the power, 3a. and 256 is 4 to the power 4 यानी कि 4b.
And if we are taking this into numerator, this will be Power minus 4b. again base same, index should also be Same. same. यानी कि 3a is equal to minus 4b. using transposition, take this on the left side, 3a plus 4b is equal to 0. if question is what will be the value of this, then answer will be if the question is what will be the value of this expression, तो फिर आप वहां पे ट्रांसपोजिशन नहीं करोगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. टेक 4b in this denominator and the answer is Minus 1. minus. If question is what will be the value of a upon b, then answer is minus 4 upon 3. again using cross multiplication, b in denominator, 3 in this denominator, so final answer is minus 4 upon 3. Again question carefully read करना कि फाइनली क्वेश्चन क्या है. Okay, next question number 15. So question number 15 ट्राई करो एक बार देखते हैं. A is equal to b to the power 2 upon 3 and b is equal to c to the power minus 2, then what will be the value of a in terms of? C. C. Try this question. Sir, answer is option C. Answer is option C. Okay, check करते हैं. Can you explain? Yes, sir. Okay, but start. So B will become C power minus 2. So that will become 1 upon C power 2, C square whole power 2 upon 3. हाँ, तो basically we are substituting this b value in this expression. Yes. And b is clearly c to the power minus 2 bracket. 2 upon 3 So this is c to the power minus 4 upon 3. can be written as c to the power, C to the power 4 upon 3. and this is clearly c to the power 4 का. Cube root. Option C. Correct answer. Next question number 16. ये try करो 16. Express all the numbers in terms of 5. These are the options.
So this is 5. 25 is 5 square. 5 power 2. 2n plus 2. This is 5 square and this is 5 to the power 2n minus 1. Okay, तो पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. This is 5 to the power 2n plus 3 and this is 5 to the power 2n. 2 minus 1 is Plus 1. plus 1. Here we can easily take common 5 to the power 2n plus 1 and remaining is 5 square plus 1. 1. Any doubt in this step? No, sir. Okay, now denominator. Sir, 25 is uh, so 25 is 5 square. This is 5 to the power 2n minus 105 and this is 25 to the power n minus 1 यानी कि 5 square and bracket n minus 1. So 2n minus 2 and 125 is 5 into 20. I think it should be 125. नहीं बेटे, करेक्ट क्वेश्चन है वो, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है. आप थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो इसे, ठीक है. सो 125 is 25 into 21. हाँ, okay, this is 5 to the power 1. So this is 5 to the power 2n plus 4 minus 21 times 5 to the power 2n minus 1. because e to the power m into e to the power n, e to the power n plus n यानी कि 1 plus 2n minus 2 यानी कि 2n minus 1. इसमें कोई डाउट? Now we take common as 5 to the power 2n. सपोज करो उतना ही कॉमन लेते हैं ना, 5 to the power 2n. रिमेनिंग कितना है बोलो? 5 to the power 4 minus 21 upon 5. यार आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई डाउट है क्या इसमें? Sir, how 5 power 2n plus 4 came? सॉरी 2n plus 2, 2n plus 2. अभी ठीक है? Yes, sir. हाँ, this is 5 square. Okay, done. ठीक है, so this is 5 square, this is minus 21 upon 5. Now it is 5 to the power 2n into this is 25 minus 21 upon 5. LCM is 5. and this will be 125 minus 21. Yes or no? Yes. Yes. And 125 minus 21 is 104. finally numerator 5 to the power 2n plus 1 into 5 square plus 1. 5 square plus 1 is 86. 26. and denominator is 5 to the power 2n into 104 upon 5. and upon 5 है, that will be multiplied with 5. Yes or no? Yes. Yes. 5 to the power 2n, 5 to the power 2n cancel. This is also cancelled 4 times. Here it is 5 to the power 1. This is 5. 5 into 5 25. upon 4. so final answer is 25 upon 4. Option 6, 1 upon 4. 6 and 1 upon 4. Option C. चलो ये फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. Question number 16. Anushka, can you explain now this question? Yes, sir. Okay, start then. This is 5. This is हाँ बताओ आगे बोलो. So this can be written as 5 power 2n plus 2 Correct. plus 5 power 2 Okay. into 2n minus 1. ठीक है. So numerator solve करते हैं पहले तो, है ना. So numerator is 5 to the power
2n 2n plus 3. plus 5 to the power 2n plus 1. common 5 to the power 5 to the power 2n plus 2. 1. remaining. Bracket 5 power 3 plus 1. बेटे 2n plus 1 कॉमन आ गया ना, तो 3 में हाँ से ये 1 सर 2 plus plus 1 5 square is 25 plus 1 is 26. so this is numerator. ठीक है, अभी डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करते हैं. So denominator is 25 into 5 to the power 2n minus 105 into 25 to the power n minus 1. Next step. Sir, 5 can be written as 5 power 2 into 5 power 2n Okay. and 105 into 5 power 2n minus 2. This is 5 to the power 2n minus 2. And what is what about 105? 5 into 21. ठीक है. This is 5 to the power 2 plus 2n okay. minus And this is minus 21 times 5 to the power 2n minus 2 plus 1 minus 1. common 5 to the power 2n. remaining 5 square 5 square minus 21 और ये minus 1 भी remaining है ना, yes sir यानी upon upon 5. हाँ LCM 5 125 minus 21 104 into 5 to the power 2n. this is denominator. Okay, so finally numerator upon denominator. Numerator is this 26 times 5 to the power 2n plus कितना था वहां पे plus 1 1 upon denominator is 5 to the power 2n into 104 upon 5 upon 5 which ये can be upon written as multiplied by 5. हाँ next step बताओ. 5 power 2n and 5 power 2n will get cancelled. Okay, So it will be 26 upon 4 into 25. how 25? This is 5 to the power 1 यानी कि 5 into 5 25 upon 4. हाँ ये इसका फाइनल आंसर है. विराज, विदित, वेदांत, तनु, सोहम, श्रावणी, दिविजा, हर्षिता, ओजस. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, next question number 17. 17 आप लोग ट्राई करो. यार ये आप लोगों को ऐसा होमवर्क सॉल्व करना था, लेकिन तुम लोग अभी पूरा मेरे से सॉल्व करवा रहे हो. 17. This is 5 root 5 into 5 cube divided by 5 to the power minus 3 by 2 is equal to 5 to the power a plus 2. We have to determine the value of a. Sir, answer is 4. Answer is The answer is 4. 4. option A. Yes. Yes. Okay, 17. Answer is A. Correct answer. So 17. This is 5 root 5, yani 5 to the power 3 by 2. 3 upon 2.
divided by 5 to the power minus 3 by 2. Yani this will be in numerator 5 to the power 3 by 2. E to the power m into e to the power n, e to the power m plus n, 3 by 2 plus 3 by 2, 1.5 kg plus 1.5 kg यानी कि 3 kgs equal to 5 to the power. अच्छा एक सेकंड इसमें एक टर्म और मिस हो गया. 5 to the power 3 is also there actually. So this is 5 to the power 3 यानी कि total 5 to the power 6 is equal to 5 to the power a plus 2. Clearly base same, index should also be same. A plus 2 is equal to 6. A is equal to 4. काफी सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये ट्राई करो. x plus y whole power minus 1 multiply with x to the power minus 1 plus y to the power minus 1. अच्छा किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो है ना, स्पीड वगैरह का कुछ भी इशू है तो आप लोग बोल सकते हो. Then x into y to the power minus 1 plus x to the power minus 1 y and then minus 1. ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो. दिस इज 1 अपॉन x प्लस y. यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? Plus y upon xy. दिस इज y प्लस x. यहाँ पे एलसीएम, अच्छा आप ये भी कर सकते हो है ना, लाइक बेस सेम बना सकते हो, लाइक एलसीएम विल बी क्लियरली एक्स वाई. सो दिस इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ x and this is multiply and divide with y. Now LCM is xy and numerator is x square plus Square plus y square. Y square. and whole power Minus Minus 1. this is 1 upon x plus y, this is y plus x upon xy and यहाँ पे है power minus 1 यानी कि reciprocal यानी कि this x plus y And x plus Y. xy and xy. also cancel. Final answer is 1 upon X square square y square. option B. option B. B. correct. So final answer is option. Any doubt? No sir. Now question number 19. 2 to the power x, this is equal to 4. Then we have to determine the value of this expression. This is 2 to the power x. This is 2 to the power x upon 2 is equal to 4. Let's say this is a. So this is a minus A upon 2. is equal to 4. 1 kg minus half kg. कितना होता है? Half kg. यानी a by 2 is equal to 4. A is equal to 8.
यानी 2 to the power x is equal to. 8. So Now question is this: 2 to the power x plus 2 to the power x upon 2. yes. So you Huh. can write 8 plus 8 upon 2. Final answer is 12. option B. B. ठीक है, next question number 20. Question number 20 काफी classic question है. X is equal to y to the power, Z. y is equal to z to the power, X. and z is equal to x to the power. Y. Then we have to determine a relation between x, y and z. Okay. देखो इन क्वेश्चंस को करने का जो पर्पस नहीं बोलना चाहिए, मतलब फाइनली जो हमारा एम है दैट शुड बी इक्वल साइन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड बेस शुड बी सेम, so Equal. that we can equate the Equation or powers. so that we can equate the powers. Understood? Yes, sir. So first we have to just make base same. हाँ, तो पहले बेस सेम पर्पस है हम लोगों का यहाँ पे. ओके, सो दिस इज z. z is equal to x to the power y. This z we can apply here. So this is y is equal to x to the power y bracket, X. यानी x to the power, XY. and this y can be written as here. So this is x is equal to x to the power xy bracket. Z. हाँ. So this is x is equal to x to the power XYZ. and this is x to the power 1. Clearly base same, index should also be same. So XYZ is XYZ equal is to 1. equal to option B. just z यहाँ पे substitute, then we have to find out the value of y, and वो y यहाँ पे substitute. Okay, next question, question number 21 solve करते हैं. 21 is 1 upon 1 plus, this is x to the power b minus a, यानी x to the power b upon x to the power A. plus x to the power c upon x to the power A. a. ठीक है. This one can be written as x to the power a upon, X to the power A. so clearly bases are same, denominators are same, so LCM is x to the power. हाँ, and this will be this plus this plus this. This is 1 upon. So can you explain that first step again? What is 1 plus 1 upon 3? This 1 can be written as 3 upon 3. Yes. So 3 upon 3 plus 1 upon 3 यानी कि 4 upon 3. Yes. हाँ, in the same way this 1 can be written as x to the power a upon x to the power a. Yes. तो अभी denominator same हो गया ना? Yes. So x to the so we power have a, to. Yes. and just added these terms a, x, y, and xc, and this can be written as this. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आप सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन सॉल्व करना अपने आप से आफ्टर लेक्चर. तो वो आता है x to the power b upon this, and third expression will be this actually. हाँ, अभी आप बताओ इन तीनों को आप ऐड करते हो तो फाइनल आंसर Sir, 1. 1 आएगा sir. करेक्ट है, ऑप्शन सी. Yes. ठीक है, ट्राई करना अभी बाद में लेक्चर के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. So find out the value of x if this upon 13 is equal to 7. काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. This is 3 to the power 2x minus 2 plus 10 upon 13. is equal to 7. 13 7 जा
91. Using transposition, take 10 on the right side, 81, 80. and 81 is 3 to the power. 4. Again, base same, index should also be same. 2x Same. minus 2 is equal to 4. 2x is equal to 6. x is equal X to is equal to 3. 23 try करो अभी. Question 23. Five, 6, 10 or 15. 2 to the power 1 upon 2, 3 to the power 1 upon 3, 4 to the power 1 upon 4. This is 10 to the power minus 1 upon 5. This is division, this, then this, then this, and then this. Okay. चलो ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में. This is 2 to the power 1 upon 2. This is 3 to the power 1 upon 3, and this 4 is 2. 2 square. हाँ, तो this is basically 2 square multiply with 1 upon 4. 2 Yes. times cancel. So this is 2 to the power. 2. 1 upon 2. हाँ, now this 2 to the power 1 upon 2 and this 2 to the power 1 upon 2. 2 to the power 1 upon 2 plus 1 upon 2. A to the power m into a to the power n. Yes or no? Yes, sir. 1 upon 2 plus 1 upon 2, 1, यानी 2 to the power 1 कितना आ गया बोलो? 2. So this is simply 2. This is 3 to the power 1 by 1 3. upon 3. Okay. Now this is 10 to the power minus 1 upon 5 will go in numerator because index negative है, and will become 10 to the power 1 upon 5. 1 upon 5. 1 upon 5. Okay, one more thing. AB to the power m can be written as a to the power m into B to B the to power. the power m. in the same way 10 is 2 into 5. Yes. So can be written as 2 to the power 1 upon 5 into 5 to the power 1 upon 5. upon कितना है बोलो? 5 to the power. 3 upon 5. ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करते हैं. डिवाइडेड यानी कि विल गेट मल्टीप्लाइड. 6 into 4 to the power Minus 3 upon 5. upon 3 to the power 4 by 3. and 5 to the power. 7. Minus 7 by 5. स्टार्ट करते हैं ना. So again index negative will go in Denominator. denominator. Index negative will come Will in. come in numerator. So ठीक है, 5 so minus this is 7 6. upon 5. 5 to the power 7 upon 5 upon 4 to the power. Minus Minus 3 upon 3 upon 5. बेटे नहीं, माइनस डिनोमिनेटर में आता है तो प्लस हो जाता है ना. Yes. So it Yes. will be 3 And this upon is 5. 3 to the power. 4 by 3. One more thing. 4 is 2. 2 square. So this is 2 to the power 6 upon 5. 6. upon 5. And this 6 can be written as 2 into 3. 3. And on the left side is this. यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? No, sir. Upon 5. ठीक है, अब एक काम करते हैं. 2, 3 और 5 इन सबको सेपरेट करो. स्टार्ट करते हैं. 2 है यहाँ पे 1 एंड देन 2 टू द पावर 1 अपॉन 5. इसके बाद में ये रहा. दिस इज 2 टू द पावर 1 2 power 1. 1. एंड डिवाइड में है 2 टू द पावर. 6 upon 5. नाउ कलेक्ट 3 टू द पावर 1 अपॉन 5. देन कहाँ पे 3 to the power 1. अपॉन 3 टू द पावर. 4 upon 3.
Okay. 5 to the power 3 upon 5 Then collect 5. 5 to the and power 5 1 to the upon power 1 1 upon upon 5. 5, 5 to the power 3 upon 5 and 5 to 5 the to the power power 7 7 upon upon 5. 5. ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इज a to the power m into a to the power n, यानी a to the power m plus n. M So plus what is 1 plus 1 upon 5? 6 upon 6 5? upon 5. 6 upon 5. Cancel. Okay. This is 7 upon 5 plus 1 upon 5, यानी 8 upon 5. 8 And upon this 5. is 5 to the Yes. power 3 upon 5. So again a to the power m upon a to the power n, यानी a to the power. M minus n. What is 8 upon 5 minus 3 upon 5? 5 upon 5. यानी 1. 1, यानी 5 to the power 1. Now what about this? और इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें, राइटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। आई थिंक देखो यहाँ पे है 3 to the power 1 upon 3. दिस इज, यहाँ पे ये ऊपर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। एंड दिस इज 3 to the power 4 upon 3, ये डिनोमिनेटर में है। फिर ये ऊपर 6 2 into 3, because 1 plus 1 upon 5 is 6 upon 5, and 6 upon 5 and 4 upon 3, ये तो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। अच्छा फाइन नहीं, कुछ नहीं। टू to the power 1 upon 2, 3 to the power 1 upon 3, 4 to the power 1 upon 4 upon this पूरा है यहाँ पर, then this is divided by this, then this and then 6. क्वेश्चन तो करेक्ट है। ओके, सो दिस इज 2 to the power 1 upon 2, ये है 4 to the power 1 upon 4, यानी 2 to the power 1 upon 2, 1 upon 2 1 upon 2 यानी कि 1, so 2. दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ये ऊपर 2 to the power 1 upon 5, 5 to the power 1 upon 5. ओके, मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर दिस इज 6 एंड ये यहाँ पे 4 to the power minus 3 upon 5, this will come in denominator 3 to the power 4 upon 3, ये भी denominator 5 to the power minus 7 upon 5, फिर ये numerator 7 upon 5, this denominator 4 to the power 3 upon 5, यानी 2 to the power 6 upon 5, ये है 6 और ये है 3 कलेक्ट करना है। सो दिस इज 3 to the power 1 upon, अच्छा दिस इज 3 to the power 1 upon 3 एक्चुअली, ये 1 upon 5 नहीं है, कितना है ये 3 to the power 1 upon 3. 3. so 1 upon 3 plus 1, 4 upon 2 upon 3. 4 upon 3. so 1 upon 3 plus 1 is 4 upon 3. आई थिंक स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है क्या? No sir, your screen is visible. ओके, सो 1 upon 3 plus 1 is 4 upon 3, 4 upon 3 and 4 upon 3, Cancel. Cancel. फाइनल आंसर इज 2 into 5, कितना आ रहा है बोलो? 10. 10. 10. सो फाइनल आंसर इज 10, यानी ऑप्शन C. सी। ओके, तो रिमेनिंग है अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ये आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 35 तक, ठीक है। देन देयर इज सेल्फ असेसमेंट आल्सो, दिस आल्सो यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 10. सो 10 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 से, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इनका एक सेपरेट डिस्कशन रखेंगे, डिस्कस करते हैं इनको। ओके, एनी अदर डाउट? No, sir. और यार थोड़ा होमवर्क करके आया करो प्लीज, है ना, होमवर्क करके आया करो, ठीक है। इसका एक शीट और सेंड करता हूँ मैं ग्रुप पे इवनिंग तक। आफ्टर दिस कंप्लीशन आप वो भी सॉल्व करना, वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, Okay ठीक sir. है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। Yes sir. ओके, बाय। Bye sir. Thank you. Have a nice day. Bye, sir. ओके बेटे।